So meanwhile, in the last class, we did about kinetic energy and the potential energy, and there is a brief discussion about energy resources. That what are the energy resources, and how can we transform into one form to another form, and efficiency criteria calculation. Okay. So first of all, if you're talking about the electricity is actually what? The flow of charge per unit time. And So in terms of the metals, we can say that the metals having free mobile delocalized electrons, right? So वो so free elect sorry, what is flow of charge mean? flow of charge means the charge is actually moving from one point to another point through a conductor. For example, if we use a copper wire Yes. for the passing of the electricity. So what is exactly happening, that the particles, or you can say electrons, are mobilizing or moving from one terminal to another terminal, okay, over time. So electricity, we know that as a secondary energy resource because it produces is produced using primary energy resources like coal, nuclear power, wind. So how is electricity generated? This is very important. Electricity itself we can generate by using hydroelectric systems. Wind, wind mean tidal. Yes. Windmill. Do you know windmill? Yes. Yes. Yeah, nuclear. Nuclear mean atomic energy. Solar. Yes. Solar is a very common right now. Solar Yes. panels. And that's what tidal waves. So wind और tide same नहीं है? बेसिकली विंड जो होता है ना वो प्योरली आपका विंडमिल पे चल रहा होता है, और टाइडल्स जो होते हैं वो आपके सी शोर के ऊपर जो वेव्स बन रही होती है ना उसके थ्रू आप जनरेट करते हैं, यानी कि वहां पे जो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव एयर होगी तो वो टाइड्स बनाएगी, एंड देन दीज टाइड्स में यूज टू रन अ टरबाइन, और वो फिर टरबाइन हमारा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। एंड द वन ऑफ फिर द तो वो पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती बेसिकली एयर से आप वेव फॉर्म करते हो, है। ठीक है, और उससे फिर आप टरबाइन को करते हो, ओके। और विंड मिल इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ फैन बेस्ड टाइप लगा होता है, देखा होगा, वो घूम रहा हाँ होता है, जी। उस पर टरबाइन लगा होता है। फॉसिल फ्यूल जो हमारे पास है, डीजल, पेट्रोल, काइंड ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सो दीज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होती है, ये सबसे पुराना हमारा वो है मेथड है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, और इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है जनरेटर्स जो हमारे घर में भी होते हैं। फॉसिल फ्यूल्स थोड़े रिन्यूएबल होंगे क्योंकि वो थोड़े से लंबे टाइम लगाती है मगर वो बन जाती है ना वापस जैसे कोल। हाँ, नहीं, फॉसिल फ्यूल बेसिकली नॉन रिन्यूएबल होगा, एक दफा हुआ खत्म हो गया। वो तो फॉर्मेशन हो रही है जो बहुत लंबा टाइम लगता है, मिलियन बिलियन ईयर्स लगते हैं, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द प्रोसेस ऑफ। बट रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल का कॉन्सेप्ट ये है, लाइक दिस, they will all run out one day, they all damage our environment, and they currently provide most of our energy, but फॉसिल फ्यूल एक दफा यूज होने के बाद दोबारा यूज नहीं हो सकता, एक दफा हो गया उसने अपनी एनर्जी दे दी, खत्म। Okay, that's the non-renewable resources. Renewable resources are those resources like wind, waves, tides, hydroelectric, biofuels, geothermal, solar from the sun. So they will never run out. अब सन तो कभी खत्म नहीं होने वाला ना, जब होगा मतलब नॉर्मल कंडीशन तो यही कहते हैं ना भाई सन है, ओके, विंड है, वेव्स बन रही हैं। सो बेसिकली सर जो प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज है वो काइनेटिक और पोटेंशियल है ना? काइनेटिक एंड पोटेंशियल, तो बेसिकली हमारे पास दो बेसिक टाइप हैं। तो जो प्राइमरी सोर्सेज है वो क्या है? प्राइमरी रिसोर्सेज हमारे पास जो होंगी वो हम स्टार्ट करते हैं फॉसिल से, ठीक फॉसिल है, फ्यूल्स होते फॉसिल फ्यूल। अच्छा, इसके हैं। अलावा ये नॉन रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है,
सही है, ये नॉन रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी हमारे पास जो प्राइमरी है वो कौन कौन सी हैं? सोलर, विंड, जो कि हमारे अपनी विसाइनिटी के अंदर है। अच्छा, जो जो आपने मुझे डायग्राम दिखाया था इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, वो सारी वो है प्राइमरी। सॉरी। आपने मुझे डायग्राम दिखाया जो न्यूक्लियर सोलर टाइड, वो सारी हाँ, प्राइमरी है ना, वो ये सारी सारे प्राइमरी हमारे से पास होती प्राइमरी रिसोर्सेज हैं जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। है। ओके। तो सो हाउ कैन वी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी? फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा ये जो है ना क्वेश्चन आता है अब्दुल पेपर में, तो जरा जहन समझो उसको। सो बॉयलर, टर्बाइन एंड जनरेटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू रन अ बॉयलर। बॉयलर क्या करेगा? टर्बाइन रन करेगा, और टर्बाइन बेसिकली क्या जनरेट करता है? इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ये ब्लॉक डायग्राम है। जस्ट लाइक दिस इज एग्जैक्टली टर्बाइन योर, क्या करता है? लिसन केयरफुली। टर्बाइन बेसिकली वो मोटर होती है जो कि रन करती है जनरेटर को। ठीक अच्छा। है, अब ये हो कैसा है देखो, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। इन द बॉयलर फ्यूल burns to heat water, and the water turns into steam. हम्म, Okay, fuel used like coal, oil, gas, and then steam travels along the pipes and makes the turbine spin. This is exactly the turbine of the Raman. सही। Okay, and this is the setup of the generator. The सही। turbine turns the generator. Inside the generator there is a magnet, and then magnet spins to produce electricity. Got it? So this is जरा कुछ exactly the process through which we ताकि can मैं generate electricity from boiler, turbine, and then generator. Yes, Abdul Rahman. जरा आप शुरू से कर सकते हैं ताकि मैं कॉपी कर प्रोसेस। Don't need to copy, my dear. This one. नहीं सर, जो सारे नोट्स से कि कैसे होता है जनरेट। Okay. नेक्स्ट स्लाइड। So let's just repeat the basics again. Like if we have energy resource, renewable or non-renewable, then we start turbine through steam, यस। water, wind. Okay, and then turbine used to for the generator to convert the movement of the turbine, and this is exactly your kinetic energy, because kinetic energy is यस। actually motional energy. So turbine runs to produce electricity through generator. Okay, so first of all, at if we use fossil fuel, तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है इसका? नंबर वन, दे आर रेडिली अवेलेबल, दे आर रिलेटिवली चीप, बट नॉट नाउ, ये बहुत एक्सपेंसिव हो गए। ठीक है, एंड वेदर पे डिपेंड नहीं करते, ये चीप वाला छोड़ दो बाकी। ठीक है, नाउ ये बहुत एक्सपेंसिव हो गया आपको, ऑयल, गैस वगैरह। ओके, फॉसिल फ्यूल पावर स्टेशन, coal, oil, natural gas burn release heat energy, which is used to turn water into steam. But the major disadvantage, जिसकी वजह से we are discouraging actually fossil fuel, that is your high pollution, global warming, climatical change disorder, and we are actually suffering from climatical change disorder. बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, and burning of fossil fuel can produce different kind of gases, just like sulfur dioxide and nitrogen oxides. These are
acid rain gases. So once these gases, especially sulfur content gases, may dissolve in water molecules, and acid rain is produced. And सर even मगर सर अपने तो चीप नहीं है, मगर ये चीप नहीं है, लाइक एग्जैक्टली। मगर दूसरे जो रिन्यूएबल सोर्स है, विंड विंड मिल, उसके exactly. हिसाब से तो चीप, इससे तो सस्ती उसके है। हिसाब से हमें चीप ही इस तरह लग सकता है, लाइक कि अगर हमें विंडमिल या सोलर पैनल लगाना है तो वी रिक्वायर अबाउट 1 मिलियन और 2 मिलियन समथिंग रुपीस, हम्म। एक हम्म। प्रॉपर सेटअप लगाने के लिए। एक दफा की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन फिर बाद में प्रॉब्लम नहीं होती हम्म। कंपैरेटिवली। हम इसी वजह से जो है इसके ऊपर जाते नहीं, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है फॉर द वन टाइम फॉर हम्म। रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब यहाँ पे फिर हम उसको सफर कर रहे होते हैं, बट एज पर द लॉन्ग टर्म, अब यानी कि राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट not as the past before. I'm just talking about 2021, हम्म। 2021। उसके बाद अब फॉसिल फ्यूल आपके प्राइसेस जो होते हैं ना, वो काफी आपके रेंज से बाहर हो रहा है। हम्म। बिफोर दैट लाइक 4 और 5 years बैक फॉसिल फ्यूल प्राइसेस सही थे, कंट्रोलेबल थे। लेकिन ये 4-5 सालों के बाद अब जो शुरू हो गया ना ये वाला टेरियो, तो इसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है प्राइस वाइज फॉर द फॉसिल फ्यूल, और काफी चीजें एक्सपेंसिव हो गई हैं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। बट ओके। रिलेटिवली यू आर राइट कि आप फिर भी चलो चला लेते हो, कर लेते हो, मतलब मिलियन की इन्वेस्टमेंट्स आपको नहीं करनी पड़ती। लेकिन फॉर द लॉन्ग टर्म फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं वो हमारे इतने ज्यादा काम नहीं आने वाले, ऐसे मतलब चलो नॉर्मल कंडीशन में हालात भी लग रहे हैं ऐसे। चलो, सीआई में तो इतना डेप्थ में नहीं जाना पड़ेगा। नहीं, ये तो हम एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, एंड इवन दिस टॉपिक इज एक्चुअली इंक्लूडेड इन योर ज्योग्राफी एज वेल। ओके। ओके, तो उसमें आता है डिटेल के अंदर अब्दुल रहमान, उसमें आता है अच्छा। ओपिनियन, ओपिनियन करके कुछ आता है, तो यू शुड नो हाँ। अबाउट दैट। Now, the world is actually moving towards biofuels, and biofuels are renewable energy sources. They can be solid, straw and wood chips, liquids like ethanol. Acha, ethanol is prepared by using corn and sugar cane. Okay, by using sugar cane है। sugar cane and corn. अच्छा। Okay, so they burn to turn the water into steam, which drives same way. हमें एनर्जी चाहिए होती है, बाकी का मेथड सेम है, यानी कि मेजर कंटेंट या मेजर बॉटम लाइन इज दैट हाउ कैन यू रन योर टर्बाइन। सही। आप टर्बाइन आप फॉसिल फ्यूल पे चला लें या बायोफ्यूल पे चला लें या रिन्यूएबल रिसोर्स पे चला लें, गॉट इट। तो बायोफ्यूल एकदम यूज करें तो खत्म नहीं होता। बायोफ्यूल बेसिकली कंपैरेटिवली ये भी कुछ फॉसिल फ्यूल की ही तरह है, क्योंकि अच्छा। आप नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट हो ना। हम्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक क्रॉप की फसल जो है, एक क्रॉप की फील्ड आपने पूरी रेडी की हुई है, बट नेचुरल डिजास्टर की वजह से वो सारा खराब हो गया, रेन हो गया, फ्लड आ गया, कुछ भी हो गया, हम्म। तो फिर बायोफ्यूल की इफेक्ट हो गया ना, प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यानी कि दिस इज बायोफ्यूल आर नियर बाय फॉसिल फ्यूल। फॉसिल बस मीन दैट कि वी आर एक्चुअली टेकिंग फ्रॉम अर्थ, ठीक है, हम्म। जो उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेट करते हैं फिर बाद में, और बायोफ्यूल जो है हम ग्रो कर रहे हैं। लेकिन ये हम्म। हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्सेज जरूर हैं, बट ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन द वेदर एंड क्लाइमेटिकल कंडीशंस। ओके। ओके, जस्ट लाइक वाटर हमारे वर्ल्ड में कम हो रहा है, तो हम्म। इनको हम ग्रो कैसे करेंगे, ग्रो करेंगे तो फिर हाँ। हम उसको लेकर जाएंगे ना आगे, कन्वर्ट करेंगे। हाँ। सो एक्चुअल द एनर्जी क्राइसिस सेज व्हाट वन थिंग, कि हम उसको गेन कहाँ से करें, हमारे पास क्या रिसोर्स रह जाएगा इन फ्यूचर में, कि हम उसको गेन कैसे करें, हम्म। और गेन करके फिर अपना टरबाइन हमने कैसे चलाना है। ठीक है, क्योंकि टरबाइन चलेगा तो फिर जनरेटर चलेगा। So हाँ। that's why the disadvantage is right. The natural habitats may be cleared to make a way for biofuel crops, and some food crops may be lost. एक और ये प्रॉब्लम है कि फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन ग्रोइंग वीट, ओके, और हाँ। फिर उसने वीट को छोड़ के क्या करना शुरू कर दिया, शुगर केन उगाने शुरू कर दिया, तो हाँ। जो वीट की जो डाइवर्सिटी वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, प्रोपोर्शन डिस्टर्ब हो सब जाएगी। अगर देखा जाए तो
शुगर केन भी फूड का ही सोर्स है, तो अगर हम लोग उसको हाफ में डिवाइड करके दोनों के लिए यूज कर लें। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कॉर्न भी फूड का रिसोर्स है, बट हम खाने में शुगर केन तो नहीं खाएंगे ना भैया, हाँ। ये इशू है। तो आपके जो एक बायो साइकिल चेन है ना, जिसको हम हम्म। इको चेन कहते हैं, वो फिर डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, ये भी प्रॉब्लम है। एनी हाउ, वो फिर आप ज्योग्राफी के अंदर पढ़ोगे। न्यूक्लियर एनर्जी, this is the now our days nuclear energy is a very versatile type of energy, and most of the countries are trying to build their nuclear power stations, और उसके लिए they are using radioactive elements. अच्छा, न्यूक्लियर एनर्जी वी कैन ड्राइव इनटू टू मोड्स। वन इज योर पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव मोड, जो कि हम एनर्जी रिसोर्स के लिए यूज कर सकते हैं, एंड सेकेंड हाँ। इज योर नेगेटिव, यू कैन से कि वो एटम बॉम्ब और वो न्यूक्लियर वॉरहेड्स बनाने के लिए आप यूज करें। हाँ। ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज want to try their nuclear energy criteria, but जो वर्ल्ड लीडर्स कंट्रीज हैं वो उसको क्या करती हाँ। हैं, मना करती हैं, उसको डिस्करेज हम्म। करती हैं, बिकॉज दे माइट हम्म। थिंक दैट कि ये एनर्जी बनाते बनाते किसी दिन क्या बना लेंगे, हाँ। न्यूक्लियर वॉरहेड्स बना लेंगे। सो हम्म। ये एक इशू है। इन पाकिस्तान वी आर न्यूक्लियर पावर कंट्री, ठीक है जी, हाँ। बट हम न्यूक्लियर रिसोर्सेज को इतना ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर पा रहे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से फिर यू नो वेल व्हाट आर द सिचुएशंस राइट नाउ। सो हाँ। nuclear fission involving the splitting of the atom, as you as I told you earlier, remember nuclear fission and fusion process in the last lecture. यस। यस। So यहाँ पे nuclear fission होती है। हम्म। Okay, so the main disadvantage of a nuclear power station is that radioactive waste, this is the one of the most dangerous thing, radioactive waste. Sir, I can't hear you. Now can you hear me? Hello. So this, so the main disadvantage is your nuclear waste, your radioactive waste, which is very dangerous and difficult to dispose of, because हम्म। if this waste may leak, हम्म। so बिल्कुल वैसे इम्पैक्ट होगा जैसे कि आपका एटॉमिक बॉब। वॉरहेड वाला जो होता है इसमें। And even हम्म। this is very sensitive and very dangerous criteria, because the water हम्म। which is used as a coolant, it is called हम्म। heavy water, and हम्म। if the tank of the heavy water may spill or leak, तो जितने एरिया में वो पानी जाएगा, जितने एरिया में वो उसका इफेक्ट होगा, तो इट विल बी वर्स्ट। देयर वी हैव एन एग्जांपल ऑफ चेरनोबिल, जो रशिया में था, इंडिया में भी हो चुका है इसका एक्सीडेंट, जापान में हो चुका है इसका एक्सीडेंट। तो पूरी पूरी जो वहाँ की लोकेलिटी होती है वो पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो तो ये लीक हो गया तो एक पूरी कंट्री डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती? बेसिकली जब ये लीक होते हैं तो दे द लीक वाटर कंटेन रेडिएशंस, सो रेडिएशंस वी कैन नॉट स्टॉप। ये बिल्कुल वैसे ही स्प्रेड होते हैं जिस तरीके से, अगेन आई एम रिपीटिंग, वॉर हेड्स को अगर आप यूज करें तो बिल्कुल ऐसे होगा, और इससे फॉरन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, और ह्यूमंस के लिए बिल्कुल ऐसा है कि आप इसको सर्वाइव नहीं कर सकते, डेंजरस है वो। नाउ द वेव पावर, this is somehow we can apply in our seashores, but करे कौन, ठीक है। so advantage is no pollution, no fuel cost, running cost भी very nominal है, can be used on small islands. Unfortunately we have small islands, but government is not interested, stupid people. And the disadvantages is that the hazards to boat can be an eyesore, fairly unreliable as waves disappear. But main thing is that if we use a particular seashore, so definitely waves वहाँ पे कभी बनना तो बंद हो ही नहीं सकती हैं। And literally one thing I tell you, हमारा जो सी शोर है वो ऐसा है कि जो कि इन तमाम वेव पावर के लिए बिल्कुल आइडियल है, परफेक्ट है, बिकॉज
our seashore temperature is moderate throughout the year. ठीक है. Water जो होता है वो एक constant level पे रहता है throughout the year. Secondly, our seashore doesn't have any proper criteria like कोई warning वाला कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे, कोई सुनामी वगैरह का सीन नहीं है. Got it? So Yes. as every respect सेफ सी शोर यू कैन से, सेव है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं. इवन यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा वो भी नहीं आते, हाई टाइड वेव तूफान भी नहीं आते, जैसे हरिकेन वगैरह काइंड ऑफ दैट नहीं आता कुछ भी. सो आइडियल सिचुएशंस हैं, हम कर सकते हैं बट करते नहीं हैं. So the basic methodology is that as the waves come into the shore, they provide up and down motion. Okay, that's what the wave motion you can say, and which is used to drive a turbine and then generate electricity. And the wave force the air through the turbine, causing it to spin. That's very easy. Now, this is exactly the tidal one, what you were asked. It's the Yes. same way, no pollution, no fuel cost, minimum running cost, tides are reliable, and usually we use barrages, okay, for this purpose. Yes, sir. And Sir, dams को भी हम use करते हैं इसके लिए. The tidal barrages are big dams built across a river. As the tide comes, it fills the estuary and the water released by using spell. तो उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से फिर टर्बाइन रन करता है. बट आई थिंक सो दैट एज अवर सी शोर इज वेरी सेफ, सो wave power is more, I think, reliable than the tidal one. क्योंकि डैम्स के लिए फिर आपके पास पानी होना जरूरी है, बारिश होनी जरूरी है. अगर बारिश नहीं होती या डैम नहीं होता तो फिर आप इसको यूज नहीं कर सकते. सर अभी हाइड्रो तो इलेक्ट्रिक पावर, सॉरी, बहुत बारिश है यहाँ लेकिन हमारे पास डैम नहीं है ना, पानी कहाँ रखेंगे. हाँ. ठीक है, पानी रखने की जगह नहीं है हमारे पास, पानी इतना है तो वो वेस्ट हो जाता है सारा. हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, अगेन सेम, no pollution, no fuel cost, minimum running cost, immediate response to increased demand, fuel reliable. Disadvantage the same as we discussed earlier, flooding, or due to environmental effect, the rate of flooding is very high throughout the world. एक, अच्छा, जहाँ पे हीट वेव हो रही है, एक जगह हो रही है ना हीट वेव हो रही है, एनवायरमेंटल एक्सपेक्ट्स ऐसे होगा. और फिर जब हीट वेव खत्म होती है वहाँ बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव किस्म के तूफान आना शुरू हो जाते हैं. सो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यूजुअली इन्वॉल्व flooding a valley to form a reservoir behind a big dam. And as water is released from the reservoir, it falls through the dam and turns the turbine, which spin and generate electricity. Okay. Geothermal energy. This is another effective method, and that method is used in different modern countries, especially USA, because there is no environmental problem at all. Free, renewable, just to cost of the drilling. You have to drill down kilometers and then use the heat of the core. This is also called the shell gas concept. Okay. और उस हीट से हम स्टीम बनाते हैं एंड देन आप उससे टरबाइन चलाते हो और टरबाइन से जनरेट होता है. एंड देयर इज another disadvantage. Unfortunately, there are very few places where this is an economic option. हर जगह नहीं है ना, ये प्रॉब्लम है इस मेथड में. बट अगेन आई एम सेइंग, पाकिस्तान में ये वाली जगह भी है जहाँ पे हम जियोथर्मल एनर्जी को निकाल सकते हैं. आपका बलूचिस्तान के एरिया, कैसे. बलूचिस्तान के एरिया के अंदर ना, एरिया एग्जैक्टली मुझे नाम याद नहीं, वहाँ पे मड वल्केनोस है. वहाँ पे अगर हम ड्रिल करते हैं तो वो जो कोर एनर्जी होती है ना उसको हम निकाल सकते हैं. और ये तो उस मगर जगह, हम्म, कॉस्ट बहुत ज्यादा है सर, पाकिस्तान के पास मई नहीं है. हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है ना यार, क्या कर सकते हैं, करता ही नहीं, काम ही नहीं कर रहे. सोलर सेल, you know well about the solar energy. हाँ. But in solar energy, we are not using turbine.
Solar energy is the one of the energy through which we directly apply solar panels and then batteries. Solar panel generate energy and stores in the battery, and battery converts that particular energy into electrical energy, which we will use. So उसमें तो ये एक इसमें एडवांटेज है. टर्बाइन और टरबाइन का नहीं है ना चक्कर, इसमें सेल्स लगते हैं, सोलर सेल्स. तो सोलर सेल्स में स्टोर एनर्जी and that cell converts sunlight energy into your electrical energy. Okay. A solar cells या solar panel concept is now very common, but this is expensive. This is expensive now. तो वो काफी हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता उसको. ये मसला है. This is the way how to use it. Solar panels. That the sun thermal radiation to warm the water for the house and blackened layer behind the pipes have absorption of radiant energy and warming the water flowing throughout the pipe. Most of the areas जहाँ पे पानी कम होता है, यानी कि पानी बहुत नहीं और वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे फिर ये सोलर पैनल्स को हम एज अ टूल यूज कर सकते हैं. सनी कंट्रीज स्पेशली जैसे पाकिस्तान, इंडिया वगैरह. Wind power, that's a windmill. The wind turbines are यस put up in exposed places such like hilltop वगैरह. इवन आप सी शोर में लगा सकते हो लाइन से. ठीक है. ये और मोस्टली सी शोर के होते हैं सी शोर पे लग सकते हैं. और काफी बेहतर है ये वाला और ये सोलर पैनल वाला सिस्टम. दैट्स वेरी गुड. सो अल्टीमेटली सन is all in all. If sun radiates energy because of the nuclear fusion that we discussed in our last class as well a bit. So सन में नेचुरल न्यूक्लियर फ्यूजन होती है ना एग्जैक्टली नेचुरल फ्यूजन हो रहा होता है जिसके रिजल्ट में आपके पास पे सारी चीजें बन रही हैं. एंड द मून इज अगर द रिसोर्स सन ऑफ द टाइडल प्रोड्यूसर टाइड्स. मून अगर सन इतना पावरफुल होता है उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया तो यहाँ वो कैसे क्रिएट करते हैं यहाँ अर्थ वो पे ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं. एक्चुअली वी आर नॉट परफॉर्मिंग न्यूक्लियर फ्यूजन इन अ वेरी इजी मैनर. ये फिजन से ज्यादा मुश्किल है. बहुत अच्छा ज्यादा मुश्किल. ओके. एनी कंफ्यूजन अप टिल नाउ? नो तो मगर सन का एनवायरनमेंट तो अर्थ के अंदर क्रिएट हो ही नहीं सकता नहीं हो सकता. मैंने कहा ना ये बहुत ही मुश्किल है. नाउ व्हाट इज एफिशिएंसी? Efficiency is exactly what? The result. You can say that the energy which we provide, and after that, what we get. This is the concept of the efficiency. And by the principle of the conservation of energy, we know well one thing about the total energy output of any particular machine is equal to the total energy input. But practically, it is not possible. Practically, it is not possible. That output आपको कभी भी 100% नहीं मिलेगा. Got it? यस So in reality, as I say, the useful energy output is always less than the energy input. So the sum energy which is dissipated during the energy conservation, maybe because of the heat, maybe because of the sound, maybe because of friction. So this energy usually takes एज पर द पर्टिकुलर परसेंटेज. तो उस परसेंटेज को हम जब कैलकुलेट करते हैं तो वो बेसिकली एफिशिएंसी की फॉर्म में होती है. एंड बाय यूजिंग दिस फार्मूला एनर्जी आउटपुट ओवर एनर्जी इनपुट. इसका स्क्रीनशॉट लो अब्दुल रहमान. टेक द स्क्रीनशॉट. यार So overall efficiency we can calculate like output we got 372, input we provided 1000. So actually efficiency we can calculate like this. Okay, output over input. So this is the formula for efficiency.
right? Yes. So meanwhile, our topical of energy resources has done. So that's enough for today. So kindly like, share, and subscribe this video. Okay. And till then, अपना ख्याल रखिए. This is Dr. Najam signing out. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.